sky starts to breathe. New York follows with heat underneath. Reading structure, steady and clean. ICT flow in every screen. Signal shift, momentum grows. Algorithm shows where it goes. V-trades, watch the charts ignite. Sniper entries hidden right. Funded profits rising bright. Building strength in every night. Follow flow, ignore the noise. Structured moves, intentional choice. Let the chart reveal the way. V-trades growing day by day. V-trades growing day by day. Institutional rhythm moves slow. Liquidity tells where price will go. Building accounts with patient plays. Consistency defines our day. Signal shift, momentum grows. Algorithm shows where it goes. Watch the charts ignite. Sniper entries hitting right. Funded profits rising bright. Building strength in every night. Follow flow, ignore the noise. Structured moves, intentional choice. Let the chart reveal the way. V-trades growing day by day. Trades growing day by day. Precise. Welcome to V-Trades. हेलो हेलो हेलो। क्या बात है दिल भाई, ये चाहिए ना यार। If you start building this consistency, I'm pretty sure things are going to look really different. So 8:34 here, and just wait. Right now, nothing to rush. I'm long Bitcoin Cash at the moment on crypto. Currently 26% in profit. जी अली भाई, तो कोई सवालात हो तो आप पूछ लो प्लीज अभी। मैं एक दो चीजें सेट कर रहा हूँ और फिर शुरू कर रहा हूँ। So what are the buyers for today? It looks sideways. Uh, After London session, like during London session, I expected the price to drop here, taking this. We have still not got that, so I'm pretty bearish. But yeah,
कोई रिस्क नहीं लगा रहा मैं, और सिर्फ डेमो ट्रेडिंग चल रही है अंटिल नेक्स्ट वीक इकोनॉमिक कैलेंडर लुक्स रियली बिजी। तो उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है, और फिर इंटरेक्ट करेंगे। और आप गोल्ड सीएफडीज खेलते हो या गोल्ड फ्यूचर्स खेलते हो? 8:30 के बाद देख रहे हो? सो 8:30 इज स्टार्ट ऑफ यू न्यूयॉर्क सेशन मेनली। देयर इज इनफ्लक्स ऑफ orders at 8:30, और फिर मेन ओपनिंग ऑब्वियसली इक्विटीज की 9:30 पे होती है। तो मुझे बताओ आदिल भाई कि आप उस पे खेलते हो सीएफडीज पे या फ्यूचर्स पे, ताकि फिर सीएफडी देखते हैं। व्हाट इज गोल्ड डूइंग? सो गोल्ड भी वो कर रहा है, सेल मॉडल में है प्रॉपर। डेली चार्ट देखें तो लेकिन प्रॉपर अच्छी जगह पे है, डेली उसमें फेयर वैल्यू गैप में। दिस इज डेली ऑर्डर ब्लॉक। वीकली प्रीवियस वीक लो भी ले चुका है, तो आप चेक करो। इसकी मिडनाइट ओपन प्राइस तक अगर आ जाती है तो मेरे ख्याल से डिस्काउंट में अच्छी बाइंग होगी। जैन के फर्स्ट वीक तक डेमो, हाँ यार, होपफुली ऐसे ही देख रहा हूँ। अम, ये इस वीक का इकोनॉमिक कैलेंडर है, और नेक्स्ट वीक का इकोनॉमिक कैलेंडर ऐसा है। तो पूरे हफ्ते हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ड्राइवर हैं। तो नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से इन न्यूज़ ड्राइवर के बाद काफ़ी लाइक बेहतर आइडिया होगा कि किधर जाना चाह रही है मार्केट। हाँ, एक दिन में काफ़ी ड्रॉप किया है देखा मैंने गोल्ड ने। लेकिन यही होता है कि प्रीवियसली भी तुम देखो तो इस तरीके से इसने 3-4 दिन ही ड्रॉप के लिए और फिर इसने कंटिन्यू किया। तो जब भी इस तरीके की मार्केट होती है जो कि बिल्कुल एक डायरेक्शन में भाग रही है, स्पेशली ऊपर की तरफ, तो उसमें जो रिट्रेसमेंट और करेक्शंस आती हैं वो रियली क्विक होती हैं, और उसमें ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता रिटेल को। यू आर एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू रिट्रेस टू 3900? 3900? 3900 कहाँ है भाई? 3900 तो ये है, और हम तो डेली चार्ट देख रहे हैं। बहुत लो है भाई। मेरा नहीं ख्याल कि उधर तक एक्सपेक्ट करो। अगर ये कंटिन्यू करता है यहाँ से सेल मॉडल, तो चलो कर देते हैं ना यार। एक मिनट रुको आप। ये वीकली है, वीकली में ये एक छोटे से वो है, फेयर वैल्यू गैप, जिसको देख सकते हो एज ए सपोर्ट। तो 4100 320, और डेली में अगर हम आ जाते हैं तो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप, इसको देख सकते हैं। और गोल्ड को बुलिश ही एक्सपेक्ट करो, क्योंकि जब तक ये वॉर सिचुएशंस और जो अभी अनसर्टेनिटीज चल रही है ना, वो चीज़ें एक साइड पे नहीं होती, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि गोल्ड में जो है वो किसी भी तरीके का लॉन्गर टर्म हम सेल मॉडल देखेंगे। लेकिन 3900 बहुत नीचे है दी।
3900 के लिए, अगर 3900 पे जाता है वो, उसको प्रॉपरली बेरिश मार्केट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सो ये सीन है भाई। चाय लेकर आते हैं अपनी। एक और चीज अदिल, मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि तुम जो है वो एशियन सेशन खेलो। मुझे एक सेकंड दो, मैं वो खोलूं वापस से। वो तो एशियन देखो ना। अभी अगर तुम ये सेशन खेलने का बोल रहे हो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ही इतनी नहीं है। यहाँ पे मार्केट खुली है, तो एटलीस्ट इधर तक नहीं खेलो। इधर तक मतलब मिडनाइट ओपन रेंज जब तक आ जाए ना, तब तक वेट करो। 12 बजे तक, 12:30 तक एटलीस्ट। उसके बाद भी मैं बोलूँगा कि 1:30 तक वेट करो। 1:30 को एज ओपनिंग रेंज यूज़ करो, और फिर लंदन में एग्जीक्यूट करना शुरू करो। तो या तो लंदन लो या तो न्यूयॉर्क लो। एशियन सेशन नहीं करो। हाँ, मूव करता है एशियन सेशन गोल्ड में, आई नो। वॉलेटिलिटी की वजह से नहीं बोल रहा कि नहीं करो उधर, लेकिन मसला ये है कि इंफॉर्मेशन उस दिन के लिए बहुत कम होती है। लास्ट वीक एशिया मैं देखूं जब भी, तो 7 बजे खुलती है ना मार्केट, ठीक है। 6 बजे सॉरी। और 7 बजे तुम्हारा ये एशियन सेशन खुल जाता है। तो आपके पास सिर्फ 1 घंटा है उस दिन का। तो बहुत कम इंफॉर्मेशन है। जितनी ज़्यादा डेटा होगा फॉर द डे, उतना बेहतर होगा। और कुछ गोल पे पूछना है तो पूछ लो अभी, फिर हम प्रॉपरली सेशन स्टार्ट करें ताकि अपनी क्रिप्टो की भी पोजीशन बेहतरीन जा रही है। 45% इन प्रॉफिट राइट नाउ। मेरे पास लिटरली $10 थे इसमें, एंड आई हैव ग्रोन इट टू, अभी मैंने रियलाइज नहीं किया है, ये प्रॉफिट लाइक $76 तक कर लिया था शायद। और अभी मैं प्रॉफिट में हूँ $27, तो प्लस $100। तो और मुझे याद है जब मैं क्रिप्टो करता था एक टाइम में, तो मैंने 4 दिनों में 250 को, लाइक 120, नो $220 को $5500 किया था। एंड आई डिड नॉट विदड्रॉ एनीथिंग एंड ब्लू एवरीथिंग। दिस वाज 2023 if I'm not wrong. What is gold about to do right now? तो मैंने बोला ना कि गोल्ड को जो है वो इसमें रिट्रेस करना चाहिए। देखो अभी ये 4 घंटे की इस इनएफिशिएंसी में है ना, तो या तो अगर ये बहुत ही बेरिश हुआ तो इधर से ही सेल ऑफ कर जाएगा, लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये थोड़ा सा और रिट्रेस करेगा, और एटलीस्ट इस इनएफिशिएंसी में आएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि तुम लॉन्ग देख सकते हो इसको। इधर तक ये टारगेट होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी प्राइस क्या होनी चाहिए जहाँ पे एंटर करो तुम, वो समवेयर अराउंड मिडनाइट ओपन प्राइस होनी चाहिए। दैट विल बी अ डिसेंट डिस्काउंट। ये इनएफिशिएंसी देख रहे हो 15 मिनट की, अगर इधर आके सपोर्ट करती है तो इसको स्टॉप ले लो।
इस लो को स्टॉप ले लो, लंदन लो को, या फिर अगर बहुत बेरिश है तो लंदन लो को वेट करो कि वो स्वीप कर ले। अगर वो नहीं दिखता, मतलब यहाँ पे देखो जब प्राइस आए ना कि क्या कर रही है, और फिर ये वाला हाई ले लो एज योर टारगेट। लेकिन मतलब ये ऑब्वियसली अपनी एनालिसिस करना, अपना रिस्क करना, और मैं तो बोलूँगा कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं लगाओ अभी। एक हफ्ते पूरे साइड पे बैठो। देखो इवन एनक्यू भी कितना वैसे चल रहा है ना, पूरे दिन साइडवेज। तो यू वाइप्ड इट? क्या वाइप कर दिया भाई? हाँ डेमो देखो। तो डेमो के लिए मैंने बता दिया ना कि वो जो है मिडनाइट ओपन प्राइस को देखो, इस 15 मिनट इनएफिशिएंसी को देखना कि ये इधर अगर सपोर्ट ले रही है और लंदन लो के लिए नहीं आ रही, तो यहाँ से लॉन्ग अपना कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करना। वरना ये दो लोज भी बहुत अच्छे हैं, इक्वल लोज। और ये इनएफिशिएंसी है 15 मिनट की, तो इधर सपोर्ट कर रही है तो और डिस्काउंट मिलेगा। गुड सीन है, गुड सीन है। लाइक नहीं किया अभी तक अदील? इतने सवाल पूछ रहे हो तुम पिछले कितने मिनट से? 15 मिनट से? ओए ओए ओए, जलम है जलम। 50% in profit on my Bitcoin cash long. So you see $108. I've grown this from $9 actually in last 3 days. I deposited $50 or $55. Then was left with only $5. Then these guys, Weeks, this is a new crypto exchange. They gave me $4 of bonus, and so I had somewhere around $9 or $10. And since then, I've been on winning streak. नहीं किया था दिल भाई, हमने देख के बोला है, ऐसे ही नहीं बोला है। होशियारी। So this looks really nice, to be honest. NQ looks like it wants to sweep the lows that we mentioned earlier in the London live stream. You can watch it on my YouTube, Twitter, or Kick page. Yesterday's live stream was not, we were not able to stream over YouTube. So that is available over Twitter and Kick as well. खैर हो गई भाई, खैर हो गई। So, yep, that is how I'm looking these markets. We are inside macro right now. Okay, I would like to
interact here. So it is actually last week's Tuesday's low that I am looking as liquidity, drawn liquidity for today. Setting around 613. That should be fine for me. Okay. I got filled there on our limit order. Taking 3 off on today's low. So let's see. We have got 5-minute inefficiency here, but I'm expecting it to continue dropping lower as we are inside macro 850. So yeah, I am expecting it to not take these highs. Bro, what are you even talking about? So this is MNQ. It is NQ is so volatile, man. You see, London session 685 and 754. So that is 70 points. 70 points basically means that if you are playing one NQ contract, that is $1,400 risk. I am playing MNQ, so these are the smaller contracts. NQ is really volatile, man. You see, this is the morning session. 820 and 660. So basically 160 points, man, within 1 hour. There is so much volatility and opportunity in NQ, like it, you cannot compare it even with crypto, I would say. If you know what you are doing, know proper risk management, it's a beast. So volatility, you should be chasing volatility as a day trader because if the market is not moving, how are you going to scalp intraday? क्या समझे दिल भाई? I can see the okay वो ये है आखिरी में से. But the best advantage trading on MNQ or NQ or on any futures is कि especially जब आप नए हो और स्टूडेंट हो कि उसकी जो प्राइस है ना वो सबके पास सेम होगी एट द टाइम, भले आप किसी भी ब्रोकर के साथ हो, तो
एज अ न्यू स्टूडेंट वो उसमें आपको प्रिसिशन पढ़ने में और चीज़ें पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। ब्रेकआउट्स तो होते ही है ना। अब देखो, अगर तुम ब्रेकआउट की बात कर रहे हो, कोई अगर ये देख रहा था कि लंदन सेशन में कि अगर एशियन सेशन के नीचे ब्रेकआउट करेगा तो मैं शॉर्ट लूंगा, तो वो तो इधर भी खराब हुआ। तो ब्रेकआउट के अगेंस्ट खेलते हैं हम, मतलब आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि सेशन लिक्विडिटी ली, हाइज लिए, उसके अगेंस्ट फिर शॉर्ट करो। एक्सएम और एक्सनेस क्या है? अपने लिए इतनी चीज़ें मुश्किल कर दी हैं यार अदिल भाई, सिंपल रखनी थी। तो इट लुक्स लाइक कि वो 5 मिनट पे की इनएफिशिएंसी पे जा रहा है। इट लुक्स लाइक दे इट वांट्स टू फिल दैट एंड वी माइट बी स्टॉप्ड आउट। ट्रेडिंग व्यू को सिर्फ उस पे लो। हाँ, ब्रोकर्स जो सीएफडी के ब्रोकर्स हैं वो सीएफडी के ब्रोकर्स हैं, उनके पास तुम फ्यूचर्स देखने जा रहे हो तो क्यों होंगे उसके पास? क्रिप्टो एक्सचेंज पे मैं स्टॉक्स सर्च करूं, ऐसी बात हो गई है। तो ये है कि ट्रेडिंग व्यू पे देखो चीज़ें, पेपर ट्रेडिंग करो। और पेपर ट्रेडिंग के लिए शायद मेरे ख्याल से तुम्हें प्रीमियम अकाउंट चाहिए होगा, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। यूज़ दीज टूल्स, शॉर्ट पोजीशन, यहाँ से तुमने शॉर्ट पोजीशन लगा दी, ये तुमने लगा दिया कि ये है तुम्हारा और ये टीपी है, और ऐसे स्टडी करो। एनी गुड फ्यूचर ब्रोकर्स? एएमपी फ्यूचर्स, उनके अलावा तो मुझे नहीं पता। और मैं तो प्रॉफर्म से खेलता हूँ, लाइक आई डू नॉट डिपॉजिट माई ओन मनी up till now, because there is one certain goal that I am chasing right now। और उसके बाद मैं अपना पर्सनल अकाउंट बनाऊंगा using prop firm payouts। प्रॉप फर्म्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स है, वो उनकी सीएफडी की भी है। माई फंडेड फ्यूचर्स है, ट्रेडिफाई है। सो माई फंडेड फ्यूचर्स और ट्रेडिफाई आर नाउ ऑफरिंग डेली पे आउट्स। So daily payouts are a game changer in prop industry, I would say. Take profit trader was really beneficial for that fact last year for me. I got bear trap there. Impulsive trade, I would say, could have been avoided. And the annoying part is that here's where I should be looking entry for the same bias, but because of my risk management, I cannot drag my stop loss any further. Let's see our Bitcoin position. Bitcoin Cash.
All right, pretty good. Up 75%, taking 50% off there and then leaving rest for there. It will take your stop loss and down. Yes, sir. It did the same in London session as well. Like our stop was sitting at this high on second trade. I did two trades and both of them were losers. So after like at the finish of London session, it took that high, I took my stop loss and then dumped. But it is part of the process. That doesn't mean that I should be allowed to move it here. And where I am allowed only to risk 200, I would be risking two risk elements there. So nah, that is not me. I've done all of those mistakes again and again to know that those things do not work longer time. And for 2026, my only goal is to do things and follow things that are going to ensure my survival in these markets. In fact, I won't be shorting from there because we have got opening range gap. सो ओपनिंग रेंज कैप अदिल भाई जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप अभी भी हो, येस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस जो है ना रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स की, वो ये है 4:14 PM। तो वो यहाँ पे ये ब्लू RTH क्लोजिंग प्राइस देख रहे हो, ये ऐसे मार्क्ड है। ठीक है मेरे भाई, तो अभी 9:30 पे जब मार्केट खुलेगी ना, तो कहीं भी खुलेगी, तो ये जो गैप होगा ये ओपनिंग रेंज गैप होगा। कल का जैसे ओपनिंग रेंज गैप था वो ये था कि 9:30 पे मार्केट यहाँ पे खुली और उसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी वो यहाँ थी, इतना बड़ा ओपनिंग रेंज गैप था। उसने 50% को वो किया फौरन से अचीव, जो फिर मैंने आपको मैसेज किया था, और न्यू डे ओपनिंग गैप को वहाँ पे हिट किया, लंदन हाई नहीं लिया और वापस से डंप। ठीक है, तो अभी तक ये मैंने क्यों लगाई हुई है अपने चार्ट पे कि इसका जो अपर सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन है, ये अनफिल्ड है और ES पे भी ये अनफिल्ड है। तो ये 9:30 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है रेगुलर ट्रेडिंग और क्लोजिंग प्राइस। ये एनोटेशन चार्ट्स बहुत ज़रूरी हैं ब्रो, सच में तुम गोल्ड को इस तरीके से पढ़ना तो शुरू करो। ये देखो कि इसने लंदन सेशन में भी ये न्यू वीक ओपनिंग गैप हाई से को किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रही हैं बॉडीज। ठीक है ना, तो really helpful. Reason I do not have it all the time open on my screen anymore over the stream is कि लोगों को वो समझ में नहीं आता इतना और बहुत बुरे चार्ट्स लगते हैं, लाइक रियली बिजी चार्ट्स। और कभी कभी आपको भी बहुत मसला होता है वो पढ़ने में बिकॉज यू गेट कंफ्यूज। और क्लीनर चार्ट्स की बात ही कुछ और है वंस यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। भाई ये मैं आपको 3 से 4 बार सिखा चुका हूँ, लेकिन बात वो ये है कि जब तक आप लिखोगे नहीं ये चीज़ें आप कैसे याद रखोगे। और ये मैंने डिस्कॉर्ड पे भी चीज़ें डाली हैं,
तो खुद तुम्हें ये करना होगा अपने चार्ट्स पे, वो तुम 4 से 5 बार करोगे तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, वो प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हो, लेकिन अभी भी जो सवाल हैं वो डिस्कॉर्ड पे डाल दो। डिस्कॉर्ड सर्वर को सही तरीके से यूज़ करो इन सवालों के लिए, और मैं उधर जवाब देता हूँ। उधर मैंने सारी एनोटेशंस लिखी हुई हैं, अगर कोई एनोटेशन वहाँ पे समझ में नहीं आ रही कि उसका क्या मतलब है, आस्क द क्वेश्चन एंड आई विल लेट यू नो। So for this trade to play out, I wanted to dump um, from here only. If it goes there, then I will be rather expecting the opening range gap fill around open. कब लिखोगे भाई? 3 साल से आप लगे हुए हो इन चीज़ों में। कब कब? 1 जनवरी? जनवरी से फोड़ देंगे सबको। All right, 24 minutes away from market open. तो ये सीन है। That's nice, that's nice. क्योंकि भैया जी, मैं जितना भी बोल लूँ, आईसीटी को आप जितना भी सुन लो, जब तक आप खुद चार्ट्स में जाके ये चीज़ें देखोगे नहीं ना अप्लाई होते हुए रियल टाइम में, तब तक आपका मतलब किसी का भी कोई काम नहीं बनेगा। जैन से बोल रहे हैं सबको, आप बोल रहे हैं। टेक इट स्लो भैया जी, गिव इट द टाइम इट डिजर्व्स। और मैं आईसीटी के को कंटेंट वापस से, मतलब उसके लेक्चर्स देखना शुरू कर रहा हूँ 2016 के ना। वो बहुत हेल्पफुल प्लेलिस्ट हैं सारे मंथ्स की। तो इस बार जो है मैं कोशिश करूँगा कि जो उसके नोट्स हैं वो मैं बनाऊँ इलेक्ट्रॉनिकली, वन नोट पे या कहीं भी। तो वो भी मैं शेयर करता रहूँगा डिस्कॉर्ड पे। हे क्लॉटन, हाउ वी डूइंग? Right now, the problem I am facing is not to be sure when to be speaking in Urdu and when to be speaking in English. Because the audience is really new, and although I have made Discord server to get to know them, but many people are really shy to introduce themselves. So if you guys can let me know about yourselves, that will really help me stream this in a much better way, entertaining most of you. आप कॉटेज थ्योरी भी यूज़ करते हैं? नहीं भाई, मैं कॉटेज थ्योरी यूज़ नहीं करता, और मुझे पता भी नहीं है, सॉरी। मैं सिर्फ आईसीटी कॉन्सेप्ट्स यूज़ करता हूँ। उससे पहले मैंने, मतलब 1.5-2 साल से मैं आईसीटी पढ़ रहा हूँ। उससे पहले मैं बेसिक रिटेल कॉन्सेप्ट्स यूज़ करता था, लाइक इलियट वेव थ्योरी, आरएसआई, मैकडी और उस तरीके की चीज़ें। तो मैंने उन चीज़ों को इतना वैल्यूएबल नहीं पाया, और आईसीटी को काफ़ी प्रिसाइज और काफ़ी वैल्यूएबल
I found it really useful up till now. So ICT के बारे में, और ICT by ICT, not by any other YouTuber, and that is what I'm going to recommend to everyone as well. भले स्लो उसको लेके चलो, बिकॉज उसके बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, लेकिन वो चीज़ सिर्फ वही समझा सकता है, क्योंकि वो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे बहुत साइंस है। तो आईसीटी के बारे में कोई भी सवाल हो, अगर मुझे पता होगा, आई गेट बैक टू यू। ये सीन है। आप कौन सी मार्केट ट्रेड करते हो? गोल्ड? या गोल्ड का मैंने ये किया है अभी अदिल भाई के लिए। अगर तुम स्ट्रीम में मेरे ख्याल से 15 मिनट पीछे जाओगे, 20 मिनट पीछे जाओगे, आपको गोल्ड का मिल जाएगा। शुरू के 10-15 मिनट स्ट्रीम के हमने गोल्ड पे ही डिस्कशन किया। ऑलराइट, स्टॉप आउट। तो गोल पे मैं बोलूँगा कि वेट करो बाय के लिए, समवेयर अराउंड मिडनाइट ओपन प्राइस, या फिर ये लिक्विडिटी भी ले सकता है लंदन सेशन। लेकिन ऑब्वियसली ऑब्जर्व करो, और प्रॉपर रिस्क से नहीं खेलो अभी, क्योंकि यू नो अबाउट द हॉलीडेज। सो टेक इट स्लो, लर्निंग के लिए देखो। I would recommend took longs on NQ, target Asia and London highs. Or just play the opening gap model. Is it higher than London? No. 25737.25 would be the, you know, fill there. I like to get. 737.25, so ज़्यादा वो तो नहीं है, रीजन बोलते हैं ना। गगन भाई, देखा आपने क्या किया इसने लंदन में? लंदन एंड में हमारा स्टॉप लॉस लेके इट डम्प्ड। और लंदन एंड के बाद अगर मैं बैठा होता, आई वुड हैव एंटर्ड वन मोर टाइम, बिकॉज आई गिव माई सेल्फ 3 trades फॉर द सेशन फॉर स्ट्रेट लॉसेस सिनेरियो, बट ना। So I am expecting this to not trade below this. This should be used as bullish breaker here. It has already dipped inside this fair value gap. We are 16 minutes away from the open. वहाँ से ट्रेड लिया, बाद में टीपी हिट, प्रीवियस वेब की ओटीई तक रिप्लेसमेंट। दैट्स नाइस ब्रो, दैट्स नाइस।
बट मैंने अपने आप को काफ़ी मैनेज करना शुरू कर दिया यार। पहले मैं बैठता बैठा रहता था हर वक्त, मतलब काम से आके मैं 8-10 घंटे इधर बैठता था और फिर अगले दिन काम पे जाता था। लिटरली अभी तक मेरा यही रूटीन है ना। तो आई डोंट वांट टू डू दैट एनी मोर, इट्स नॉट रियली वर्थ इट। अगर मैं ये करता रहा मैं ज़िंदा भी नहीं रहूँगा सच में, क्योंकि इट्स रियली टॉक्सिक। तो जो भी मार्केट दे रही है उस वक्त आओ बैठो सुकून से चिल करो, यूज़ इट एज यू नो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, और जितना इसको टाइम लगे लगने दो। बिल्ड इट स्लोली, डू नॉट सेक्रीफाइस योर हेल्थ, क्योंकि एक बार वो चीज़ हो जाती है ना भैया जी तो सीन बड़े ख़राब हो जाते हैं। लाइक तो करो यार दोस्तों। क्लॉटन भाई, इफ़ यू डू ट्रेड, यू नो, ICT concepts or would like to know about, do subscribe the channel, would be helpful. यार मैं एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंट हूँ। सो बेसिकली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे, जो भी लोग इनकम सपोर्ट मतलब सपोर्ट पेमेंट्स पे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको जॉब्स लगानी होती हैं। काफ़ी मुश्किल काम है। आई डोंट स्ट्रेस अबाउट इट अ लॉट। आप कब से हो कनाडा में? जी दिल भाई, गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड अभी आएगा डिस्काउंट में, उधर से देखो मिडनाइट एरिया में, मिडनाइट ओपन रेंज के एरिया में देखो, वहाँ पे अच्छा डिस्काउंट का वो बना हुआ है, 15 मिनट बीसी। और और लंदन सेशन के नीचे, लाइक सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे भी एक 15 मिनट वो बना हुआ है। कीप एन आई ऑन दैट। मैं 800 से। गुड गुड भाई, कैसे जा रहा है? सो 12 मिनट्स अवे फ्रॉम मार्केट ओपन। सही है भाई, सही है सही है। तो अगली जॉब का क्या सीन है? बट आई एम प्रिटी श्योर आप लोग स्मार्ट होते हो, कुछ ना कुछ कर ही रहे होगे आप साइड पे, उबर उबर या कुछ भी। भाई NQ 830 ओपन पे मैनिपुलेशन ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग की थी। 830, आई एम नॉट, समझा नहीं भाई। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना डिटेल में, क्योंकि 830 को अगर मैं देखूं तो 830 है ना, 830 तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट मिली है जिसको देख के मैंने शॉर्ट किया था यहाँ से, एक्सपेक्टिंग कि ये ब्रेक अवे गैप होगा। नो, रीडिंग ऑल दिस, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रेक अवे गैप होगा, ये एटलीस्ट जो है ये लंदन लो ले लेगा, तो इसलिए मैं 3 कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने यहाँ पे उतार रहा था और बाकी इसके लिए छोड़ रहा था। लेकिन इसने क्या किया कि हमें ओपनिंग रेंज गैप जो है वो येस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस है 737.5 पे। एक मिनट, लेट मी डबल चेक। 737.25, ठीक है।
और इसको भी मैं ज़्यादा रूम दे रहा हूँ, लाइक टू बी ऑनेस्ट इसको मैं ऐसे भी ले सकता था, लेकिन अभी डेमो ट्रेडिंग है और चीज़ें आहिस्ता लेके चलना है। तो मुझे वहाँ से बाइंग, आप जो बोल रहे हो 8:30 से ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग की, वो चीज़ समझ में नहीं आई। करने का मन ही है जब दोबारा मैं भाई आर्टिस्ट। ओह दैट्स नाइस यार। हाँ गगन पेंट्स यार, सॉरी डिडंट कैच इट। दैट्स नाइस। ओके मैनिपुलेशन मूव के बाद, ऑलराइट, आफ्टर दिस लो स्वेप्ट, जहाँ से मैंने शॉर्ट किया मे बी वहाँ से आपने लॉन्ग किया, नाइस एंट्री भाई। तो आप कितनी मार्केट्स खेलते हो? अभी आप गोल्ड का भी की भी बात कर रहे थे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्रेडिंग फॉर? जॉब में सीनियर 3D मॉडल। डैम ब्रो, बस ब्रो जो आप कर रहे हो वो करते रहो आप। आपको क्या किसी की जॉब वगैरह की जरूरत है? ये सीख लो टाइम बेसिस पे। हाँ बिल्कुल सही, तो आप टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, नाइस, आई लाइक इट। हाउ ओल्ड आर यू गगन भाई, इफ यू डोंट माइंड? ओपनिंग गैप, दिल भाई ओपनिंग गैप मैंने समझाया ना एनोटेशन का चार्ट से, समझ में नहीं आया? गोल्ड एनक्यू यूरो यूएसडी, वाह भाई, तो आप फ्यूचर्स भी कर रहे हो, और गोल्ड में आप फ्यूचर्स कर रहे हो या सीएफडी और वो भी कर रहे हो, फॉरेक्स भी कर रहे हो, नाइस। मैनेज कैसे करते हो मेरे भाई इतनी सारी चीज़ें? एंड देन आर यू ट्रेडिंग फुल टाइम? लुक्स लाइक। Right, we are seeing a drop even in ES as well. यार कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, मैं सिर्फ ओपनिंग रेंज गैप मॉडल को टारगेट करना चाह रहा हूँ मेनली, क्योंकि हाँ, और सच बताऊँ तो आई डोंट थिंक के उसको स्वीप करने चाहिए। हाँ ठीक है, इक्वल हाइज हैं, लेकिन फिर ये कहाँ तक जाएगा अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें? ठीक है, लेट्स जस्ट एनालाइज इट प्रॉपर्ली। वी आर 6 मिनट्स अवे फ्रॉम ओपन। तो ये वाली जो इनएफिशिएंसी इसको करनी थी, अब आप मुझे बताओ ना कि अगर इसको ऊपर ट्रेड करना था तो ये कल क्यों नहीं गया? और इधर से इसने जो रिफ्लेक्शन दिखाई है हमें, वो तो इसने अचीव ही नहीं किया, ना इधर इसने किया है ना ही ईएस ने किया है। तो टू बी ऑनेस्ट कि मैं तो इसको बेरिश लूंगा, कि मुझे लगता है कि ये जाएगा प्रीमियम में सम, विच वुड बी अराउंड मिडनाइट ओपन रेंज, और फिर हम इसको वो देख सकते हैं कि स्वीप करेगा, लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट इस पे हूँ शॉर्ट ही आज के लिए। गुड टू नो भाई, गुड टू नो, लगे रहो लगे रहो। ऑलराइट, that's nice guys, that's nice. See, good to know all of you. So, Cloten bhai, if you do like having live streams by your side while trading, you can subscribe the channel and also join Discord. वहाँ पे आपको एजुकेशनल रिसोर्सेज वगैरह मिल जाएंगी काफ़ी। न्यू भी लाइसर लेते हुए देख रहे हो भाई स्ट्रीम? नहीं करो यार। गेट वेल सून ब्रदर। ओके, got slapped there.
Bitcoin Cash got slapped as well. All right, 3 minutes away from open. Seven, 3, 7. So Adil भाई, if you are still there, आज का जो ओपनिंग रेंज गैप है वो काफ़ी छोटा है। तो जब भी छोटे गैप मॉडल होते हैं उसमें हम क्या वो करते हैं कि ज़्यादा फोर्स नहीं करते अपने ट्रेड्स ना। बेहतरीन, यहाँ से मैंने शॉर्ट लिया था, यहाँ पे स्टॉप आउट हुआ, वहाँ से मैंने लॉन्ग लिया, यहाँ पे मैं स्टॉप आउट हुआ। क्या बात है। जियो। ये 6954। हाँ ना, क्योंकि ईएस का कोई गैप ही नहीं था, ये चीज़ हमें अब हम नोटिस कर रहे हैं। बताओ ना। Alright, market is about to open. It opens. देखो ना अनिल भाई, आप हो गए भी नहीं इस वक्त यहाँ पे, और ओपनिंग रेंज गैप मॉडल हो गया। I would like to short it.
All right, looks like it is going to close the gap fully on NQ as well. I like to short this. Taking my stop here. Instant stop up. Okay. E-minute, fill in this inefficiency there. Add no inefficiency on ES. Let's look at one other ascending triangle. Should be broken towards the lower end. Right, ES gets slapped. I haven't been watching the other stocks. That's not smart. That is what they did at the open. The media is getting seriously slapped there. ES is back in this range. Should have waited until 940 at least. That is always smart to do whenever you are, executing in opening range gap. I meant within opening range, not opening range gap. That's what I mean. 9:30 to 10 is the opening range for morning session. ES took those two lows, equal lows. Alright, made a lower low for the opening range there. Expecting it to be slapped now. Using this as inversion fair value gap.
और 930 मैनिपुलेशन के बाद अब रियल डायरेक्ट में मूव देगा। हाँ, ये मैनिपुलेशन थी ना, मतलब ये जो ओपनिंग रेंज कैप इसने फिल किया है, सबसे पहले तो इसने ये ड्रॉप किया। अब जो ये वाला था यही मैं अपने आप को प्लेस करना चाह रहा था फ्रॉम 930, बिकॉज इट यूजुअली प्लेज आउट। मैंने इसी हफ्ते 2-3 बार किया है लाइव स्ट्रीम पे। तो मैं अपने आप को उसमें प्लेस करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा यार ने क्या किया कि इसने पहले ये लो लिया। अगर उसमें मैं लंदन लोज लेता एज माई लो तो वी वुड हैव बीन प्रॉफिटेबल, राइट। और फिर ये जो इनएफिशिएंसी थी जिसको हम ब्रेक अवे गैप समझ रहे थे, वहां से इसने शॉर्ट किया। तो मसला आपकी रीडिंग में नहीं, मसला मोस्टली जो होता है वो आपकी एग्जीक्यूशंस वगैरह में होता है। अब ये देखो यहाँ पे छोटा सा जो गैप है, ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है आज का। अब इसको ये और मैनिपुलेट करने के लिए क्या कर सकता है कि ये यहाँ से इसको इन्वर्ट करे बुलिशली, ठीक है, इसको ओपनिंग रेंज कैप को फुल्ली फिल करे और फिर वहाँ से ड्रॉप करे। तो एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। आप अब किसी चीज़ को मतलब 100% श्योरिटी है ही नहीं आपको। जो 100% श्योरिटी है वो इस अमाउंट की है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, अदर देन दैट कुछ भी नहीं है। और ट्रस्ट मी, जो मोस्टली स्ट्रेस होता है वो ये होता है कि आपने ये, आप अफोर्ड $20 कर सकते हो और आपने 200 लिया हुआ है। तो उसको $20 ही आप लो और टाइम दो, सरवाइव करो, एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल। सो अभी तक जो उसने किया है फर्स्ट प्रेजेंट फेयर वैल्यू गैप में, दैट इज़ फेयर इनफ। अब इसको आई वुड लाइक इट टू क्लोज इट बेरिशली, बट एन क्यू इज़ बैक हेयर and is not showing any resistance around 930 open price. 930 open price is really important for NQ for morning sessions. अगर वो हो बेरिश हो तो दैट शुड बी एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, क्योंकि वो प्रीमियम लेवल है फॉर द रेस्ट ऑफ दिस डे। और ये एक पॉइंट हो गया, और 12 o'clock की मिडनाइट ओपन प्राइस, दो पॉइंट्स की बहुत की लेवल है। अगर बुलिश हो दिन पे तो वही कि जो आपकी प्राइस है 930 ओपन और मिडनाइट ओपन प्राइस, दोज विल बी रियली गुड डिस्काउंट लेवल्स। स्टैंडर्ड डेविएशन बस मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ यार कि मिडनाइट ओपन रेंज की -1 और -0.5 टारगेट्स के लिए, और कभी कभी न्यूयॉर्क ओपनिंग रेंज की -0.5 और -1 फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग सेशन, विच मीन्स 10 o'clock to 11:30। अब देखो इसने इक्वल लोज बनाए और नहीं लिया अभी तक, और इट हैज़ टू, और इधर इसने ये वाली लिक्विडिटी ली है ईएस पे, समझ रहे हो। अब इधर दो ऑप्शन है, बिकॉज यू आर कंफ्यूज और ईएस ने वो ली हुई है, तो आप अपने ट्रेड को ब्रेक इवन करके सफोकेट कर लो। इट कैन स्टॉप यू आउट, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी सेविंग मनी, ऑलराइट। या फिर आप जो है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो you keep on battling with these thoughts throughout your trade, and this is what, you know, either makes it or break it for you, depending on what sort of day you are having और बाकी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। देखा, अब जब एक्सपेक्टेड था इसको थोड़ा सा बुलिश रिएक्ट करने का, इसने बुलिश रिएक्ट किया। तो मे बी एक और विजिट फर्स्ट प्रेजेंट फेयर वैल्यू गैप पे, और उधर से कंटिन्यूएशन टूवर्ड्स द लोअर एंड, that is more likely, and that is why I'm not suffocating my stop loss here. But it can easily go in, fill in the opening range gap fully, but I'm still giving 8 more handles and expecting it to not take those highs.
इधर क्या चल रहा है जी? Looks like it has taken serious lap. Alright, don't think there's anything concerning there. Alright, first partial fill there, only one micro. TradingView has been doing this, it is not reflecting the orders which are wicking through. It reflects now. It's good. Alright, guys, what do you think of this trade? Is anyone short with me? We still haven't got our first presented fair value gap on ES. But we did get it on NQ and has played out perfectly up till now. And whenever you are shorting or longing, try to place yourself inside the wicks of 1 hour or 4 hour candle. You will always get, best entries. This is 4 hour. This is 1 hour. 15-minute wicks are really nice as well. And you can usually get them by placing yourself inside a SIBI or BC on 15-minute time frame. So this is the draw on liquidity for us, major sell side liquidity that we mentioned yesterday as well. Yesterday's stream was hectic, man, because of all this price action. I think it went on for more than 3.5 hours, and I could only afford to do it because we have got holidays here. But man, it was hectic. And then it wasn't streaming on YouTube where I do have some audience, so I was all by myself as well. Which is fine. Like I do it all by myself, either ways. So really liking the price action up till now in the morning session, pretty smooth, unlike yesterday. Yesterday's morning session was pretty smooth though, but then after lunch and after it taking this liquidity, I was expecting it to basically go there and take that.
649. Oh, that is some recovery. इसी अदिल भाई एनक्यू की वॉलेटिलिटी की बात कर रहे थे ना. ये होता है एनक्यू में भैया जी. 1 मिनट में कितने पॉइंट्स? 673 से 709. So 36 points in just, I think it was within 15 seconds. Yeah, you see, 115 seconds. Low came at 674.5 and high came at 709.25. So 35 points. ये है भैया जी वॉलेटिलिटी यहाँ पे. इसकी क्या रिपोर्ट है? सही है. इसका सारा मसला ये है कि बिटकॉइन कैश को मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से. ये अपना ही चलता है. लाइक ये इतना फॉलो नहीं करता बाकी क्रिप्टो मार्केट को. तो अभी मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली टू ट्रेड इनसाइड, टेक दैट 15 minute high, create higher high for the day and somewhat sell off from within that range. Yeah. And ये रिकवरी ओके. चेकआउट यस. This is not good. And the fact that we only booked 25% of our position. Damn, that is some recovery. Let's see if they want to stop NQ here at the fill of opening range gap or not. No, it doesn't look like. Yes, looks really bullish. और बाकी जो भी स्टॉक्स हैं वो भी रैली कर रहे हैं. Thank God I'm not playing with any proper risk these days because my win rate is a mess. Alright, got stopped out. Needs to remove those not orders. Alright, some push here. Should have taken 50% off, as in 2 contracts off there. Ah, I'm fine. It was pretty much expected. On NQ, on ES, it did not even take London lows there. So we have got bullish SMT there. And we have yet not made higher highs. So we can place ourselves for long, but I would like something around the consequent encroachment of opening range. If it gives us that much discount before sweeping the highs, I might go long.
And if I get stopped out there, that is going to be my last trade here. Finding some support over here. At the high there, that is pretty bullish itself as well. Both ESN and Q are doing that. And that is too small of a range to risk anything, and then my stop will be really wide. If you guys are learning anything from this stream or finding it valuable, do give it a like. Does encourage me a bit. Things are looking really bullish, to be honest. I got slapped there. I think it's just a short retracement to further extend higher. And I like the fact that it is providing us some discount. Right, good push there. Missed that. Alright, eyes have been swept there. क्या हो गया भाइयों, इतना खामोश क्यों हो गए? लॉसेस ही तो हुए हैं दो, वो भी डेमो पे। घबरा गए के? अब सोचो इफ इधर से लॉन्ग कर देते आप इस वीक से, ओहो हो।
क्योंकि देखो इसने कल भी नहीं ली ये वाली सेल साइड, अब इसने आज ये वाली भी नहीं ली, तो दैट इंडिकेट्स बुलिशनेस। और क्या है ये, knowing that we are just that away from all-time highs. So, yes. Right, we are seeing some insane pump in BTC dominance as well as BTC price at the moment. If you guys are watching it, it's pretty crazy. That means that we might see a slap on altcoins, but it is not being reflected, to be honest. Altcoins are pretty stable up till now, but you never know. So do keep an eye if you are trading crypto there. All right, 1 minute away from 10 o'clock. I would like to see 10 o'clock dip a little in discount initially. And see if it wants to continue higher. I might long it. All right, we are seeing some slap on all several, not really significant. But I think BTC is going to invert its 1 hour CIVI bullishly. Right, let me finding some support at high there. Looks like ES wants to retrace much lower. Or maybe now they want to run the sell side liquidity. Swept the New York afternoon buy side there, while ES did not do that, indicating bearishness. And if this continues, we might continue to lower ends. Because if we see the daily chart, I think it should do a little more on the downside. Don't you guys think?
Nvidia is getting slapped. So is Apple and Amazon as well. Microsoft is the only stock holding at the highest. I would like to buy somewhere around this. This can be used as a bullish breaker. Alright, crypto is taking some slap. Yes, it's inside the opening range gap now. Going short there. Taking 3 off at 1 hour. I would like this to be left as breakaway gap for now. Taking complete position of it.
Well, ES has traded in too much discount as compared to NQ there. A good stop there from the opening range gap top. Should be good if it manages to close bearishly on this minute. I do not really like close a lot there. And the reason I'm taking only 1 hour there is the fact that previously I've seen even in London session and up till now as well कि we are on side and then we are expecting a lot. So जो भी आपको market बता रही है, it is really important कि आप उसे सुनो and then manage your expectations accordingly within that session at least. इसकी क्या रिपोर्ट है जी? Doesn't look good. Yep, around break even now. So yeah, took one shot there, quick scalp, and if it shows us willingness to trade higher from there, I will be interested to long it. But it looks like it might be going for those sell side liquidities. And continues on getting rejected. This opening range gap, which is 930 open price, is the last, support here, which has been violated on ESA.
Looks like it wants to continue much lower. Now people would call me stupid for taking everything off just at 1 hour when I could have targeted, I don't know, whatever. But I have been targeting that liquidity for the whole London session. It didn't do that. I was targeting it here as well in that run. It didn't do that. If it wants to do it now, okay, no worries. I won't be, emotional enough to place myself based on biases or feel like I'm missing on something because I'm really not. Alright, good move there. Well, it has been back and forth, like the price action yesterday and even today, both the session, London and New York. If it does invert this foolishly, I would like to take it long. Because if you look at that 9:30 open price, the bodies have still not violated it, and we can be seeing that as bullish SMT divergence. ES sweeping the morning range low while NQ do not, but we will have to wait for it a lot. Like, I would like to place myself somewhere above that, after confirming that bodies have closed above this lower quadrant of the opening range gap, because all of this push can only be also be सिर्फ ES को ऊपर लेके जाने के लिए to trade into this inefficiency. That we wanted to close above that thing that I mentioned, lower quadrant of opening range gap. See, it got slapped. So always wait for the close of the candle. Really important. So the close still indicates bearishness. We've also got FOMC minutes at 2 p.m. today.
What if we do like to participate? ये बड़ा मसला हो गया इसमें. ये भी नहीं सकते. जो भैया जी हमें भी ले जाओ. ऑलराइट, अब ये इधर तो नहीं आएगा, इधर आएगा तो इसको 3 कर देते हैं. 692.75. I filled in there. Last close, I do not really like the last close. The fact that it closed the candle above the 930 open price. I think yes can trade to the 930 open price again, and that will stop us out on NQ, I'm pretty sure. And another trade where I am shorting in discount. This happened with me in London as well. But if you take the larger perspective, I'm not really shorting or longing in discount or premium. I'm basically targeting the liquidity which it is not really reaching out for.
Hmm. Right, and straight above the first presented fair value gap and Q there. If I get stopped out, I'll call it a day. That's nice, good reaction. What has been our trading stats for today? That was our first partial, then took a loss. So $90 loss on that trade.
I'm so confused here, damn. Alright, I'll figure it out. It's the end of session. I do not like the fact that it is spending so much time there. Next minute is 10:30. Alright, yeah. So I had 2 trades in the net session. So $405 lost there. Then I had, this is the 5th trade for this session. First 3 were losses. First 2 were whole losses. On the second one, I took 1 partial, booked 25% of my profit, but it was overall loss of another $100. So let me sum this up. So overall $955 in losses minus profits. So currently we are $776 in loss for the day. Which is fair enough. $3.5 bar if this trades work out. I think it is going to be making it around 1 or 2 hours. Fact that we have spent so much time. I think it's a bullish signature.
So we hit the consequent encroachment of yesterday's opening range gap there. Not yesterday's, actually, last week, Tuesday's 22nd of December. It looks like it wants to show us some bullish SMT divergence. You're 13 minutes, 12 minutes away from macro. Macros are really important as well in ICT study. 20 minutes of interval, 20 minutes interval, 10 minutes before the R ends and 10 minutes after the R starts. And that is where you usually expect a raid on liquidity or
8 minutes away from metro. Yes, is making lower lows for the morning session. I'll be booking something below this or not. Looking at ES, it's going this literally tanking. Let's look at other stocks. Okay, yeah. Amazon. I think we should be put to on lower. And you retested the consequent encroachment of opening range gap there again. I wanted to respect this very gap. I'm going to reduce risk zone. Have to add some more. But
Looks like they want to invert that 1 minute SB bullishly. Right, yep. All right, got stopped out there. And this will be it for me for NQ at least. Let's see how our Bitcoin cash position is doing. All right, good recovery there. Pretty good. Back at 50% profit. Looks like it is going to be trading inside this 1 hour inefficiency. So now we are basically seeing the bullish SMT that I called out for, but did not really execute on that because looking at ES, we thought that it is going to trade lower. We also gave look at all of the main stocks. At that time, all of them were trading around this point level, and yeah, it was highly expected it to drop lower. But I think they are just going to keep pushing it higher. And maybe as next week is going to be pretty volatile due to the fact that we have got all of these high impact news driver. So I think that that is when they might, trade to these inefficiencies on daily chart and the leftover opening range gaps. Like if I open the 1 hour, so it might look a little disturbing. We have got all of this unfilled on ES. Similarly, we have got this lower quadrant unfilled on NQ, but it buyers keep on protecting these price levels. So yeah, they just wanna keep pushing it higher. Thankfully, I'm not risk on for this week. So nothing to worry about, good learning sessions, all of these. Really thankful for it. And I'm live here every trading session during London session 3 a.m. Eastern Standard Time and New York AM session. I try to be
Do start it around 8:30 a.m. Eastern Standard Time. If not, then 9:30 a.m. you can expect me live on YouTube, Twitter, and Kick. So if you trade Nasdaq or use ICT concepts or even crypto, you can follow me or subscribe to this channel. I will call it a day today. It's been 2 hours and I won't be taking any trades on NQ while my Bitcoin cash position is actually a swing position. So I'll just stick to it and update it over by Discord. You can find the Discord link in the description. It's completely free and it is mainly focused on ICT learning. So if that is what you are into, just give it a look. Thank you for being here, guys, and hope you learned anything. If you did, give it a like, subscribe to the channel, and yeah, I'll see you guys tomorrow. Until then, take care, stay safe, and good trading. Cheers. Bye.